Namaskar, hello and welcome to Sansad TV. I am Namrata Singh and you are watching Question Hour. This show focuses on important questions raised by members in both the House of Parliament concerning matters of national interest. In the Rajya Sabha, members from various parties posed questions related to 13 ministries and sought responses from the respective ministers. Similarly, in the Lok Sabha's Question Hour, members from diverse parties raised questions pertaining to 9 ministries and sought responses from the respective ministers. Now, let's take a closer look at some of the questions whose replies were tabled in both the houses. Lok Sabha members Dulu Mehto and Bibhu Prasad Tarai asked the Minister of Culture the present status of cultural mapping initiative nationwide under the government schemes such as National Mission on Cultural Mapping, including the number of cultural sites, artists and traditional practices documented so far, especially for Andhra Pradesh and in Bhadrak and Balasore districts of Odisha, and the manner in which this mapping exercise is being used for policy planning, delivery of grants and strengthening of cultural tourism circuits. The ministry in its reply informed the House that the Mera Gaon Meri Dharohar portal under the National Mission on Cultural Mapping undertakes village-level cultural mapping across the country. Out of 6,38,000 identified villages, over 6,23,000 have been mapped and their data available on the MGMD portal. The portal captures a wide range of cultural elements including heritage sites, folk and traditional art forms, artists, oral traditions, beliefs, customs, historical significance, local landmarks, fairs and festivals, attire, ornaments and cuisines. However, the MGMD data is maintained in a village-wise format and is not aggregated element-wise. In Odisha, data from over 47,000 villages has been uploaded on the MGMD portal. In Bhadrak district, data from 998 villages has been mapped, and in Balasore district, data from over 2,000 villages have been covered under the initiative. The ministry further informed that under NMCM, the Mera Gaon Meri Dharohar portal has been developed as a centralized digital platform to integrate and present cultural data collected from across Indian villages, including the Mewar region of Rajasthan, as part of the nationwide cultural mapping exercise. It further informed that the primary focus of MGMD and NMCM is cultural mapping and information gathering. There is no provision for release of financial assistance to states and UTs under the scheme. The data on MGMD portal is component of NMCM is maintained village-wise and not community-wise. However, certain tribal communities from Andhra Pradesh such as Bagata, Kondadora, Valmiki, Koya, Kondareddy, among others, have been surveyed as part of the village-level cultural data. NMCM undertakes village-level cultural mapping across the country. There is no such proposal for capacity building program for marginalized artists under this mission. The MGMD is a comprehensive and interactive digital platform. To ensure periodic updating of information, the portal enables local communities and villagers to submit cultural information related to their village through the Contribute tab. Such submissions are made available on the portal after due validation and moderation. The MGMD program leads to the strengthening of rural identity by creating authentic, village-level cultural profiles that recognize local traditions, practices and heritage assets. The availability of structured cultural data on a single national portal supports planning for cultural cluster development, heritage tourism and the promotion of traditional skills. Rajya Sabha member Dhairashil Mohan Patil asked the Minister of Micro, Small and Medium Enterprises whether government is considering to allow MSME units in the Konkan region of Maharashtra to meet the 33% green area requirement for environmental clearance collectively instead of individually for each plot to ease the compliance burden, and if so, the details of any guidelines or pilot models for this. जो वातावरण होता है और इंडस्ट्रियल कार्यक्रम होता है
उसमें बताया गया है कि सेंट्रली 33% हरित पट्टी होना चाहिए, ग्रीन पट्टी होनी चाहिए। और उसमें अगर कहीं कोई बात होती है तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने संशोधन किया है। संशोधन इसलिए किया है कि अगर 35-33% हरित पट्टी के लिए अगर वो स्पेस छोड़ देते हैं तो इंडस्ट्री के काम के लिए उनका बहुत कोई स्पेस नहीं बचता है। इसीलिए इसमें एक कमेटी बनी और कमेटी ने एक सुझाव दिया, और वो कमेटी है फॉरेस्ट पॉलिसी कंजर्वेशन एक्ट 1980, और उसमें भी यही कहा था कि 33% होना चाहिए। और फिर बाद में नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है जो 1988 का है, उसमें भी 33% की बात कही थी। लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई करते हुए दो कमेटी बनी थी, उसने अनुशंसा न किया, जिससे ये हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र में हम जो 33% करते हैं उसको 29-10-25 का जो OM हम लोग विभाग के द्वारा दिया है इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए, वो 10% किया है। और इंडिविजुअल यूनिट के लिए जिसमें रेड और ऑरेंज करके किया जाता है, रेड का मतलब है जहाँ ज़्यादा प्रदूषण है, या ऑरेंज है उसमें जहाँ कम है, तो उसके लिए 15% रेड के लिए और ऑरेंज के लिए 10 किया गया है। और उसके बाद एक ग्रीन पट्टी होती है और वाइट पट्टी होती है। तो ग्रीन पट्टी और वाइट पट्टी में कोई मैंडेटरी हिसाब नहीं है कि क्या किया जाए। ये हुआ औद्योगिक क्षेत्र के लिए। लेकिन इंडिविजुअल क्षेत्र के लिए भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जहाँ बहुत ज़्यादा गैस हो या बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, वहाँ हम रेड में 25% और ऑरेंज में 20% की बात किया है, और ग्रीन में 10% और वाइट में कोई उसके लिए बात नहीं किया है। और अन्य जगहों में ये तो हुआ इंडिविजुअल में, समाज जहाँ इंडस्ट्री है और जहाँ नहीं कुछ है वहाँ के लिए भी कहा गया है। तो उसमें रेड के लिए 20 और ऑरेंज के लिए 15% किया गया है। और उसमें यदि क्षेत्र वाइज की बात करते हैं तो वो भी हम लोग बतलाया है इसमें, जिसमें 36 जगहों में हम लोगों ने इसके लिए काम किया है। और उसकी सूची मेरे पास है, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, विलम्ब लग सकता है, लेकिन इसको हम सारांशता ये कह सकते हैं कि कम से कम 38 जगहों में हम लोगों ने किया है। और जो अनुमोदित गारंटियाँ और संख्या की बात है वो है 10,76,980 है, और राशि उसमें हमने दिया है 1,48,03,14। तो इस तरह से हम लोग उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। तो पार्टिकुलर भी कहीं कहीं है, लेकिन एज ए होल सारे राष्ट्र के लिए, भारत के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। और जहाँ तक सुगम ऋण के लिए यह मामला है, जो लगातार फाइनेंस और मिनिस्ट्री में तथा बैंक के साथ टेक ओवर किया जा रहा है, और जिसके तहत कोकन है, चाहे महाराष्ट्र के अन्य जगह है, सब जगह हम लोग इसके लिए व्यवस्था किया है सर। Rajya Sabha member Mayank Kumar Nayak asked the Minister of Civil Aviation the current number of complaints received through the Air Seva web portal and mobile app during the last 3 years, whether government has recently undertaken any assessment of passenger satisfaction with the grievance redressal system of Air Seva, and if so, the key findings thereof. चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं एयर सेवा की अगर बात करूं तो एयर सेवा की शुरुआत 2016 साल में की गई थी कि पैसेंजर्स के तहत एक इनिशिएटिव के साथ जिनके ग्रीवेंसेस हैं वो डायरेक्टली स्टेक होल्डर के पास ही ना जाएं, बल्कि मिनिस्ट्री भी उनके ग्रीवेंस एड्रेसल में वो सपोर्ट करे। इस भावना के साथ हमने नवंबर 2016 में ये एयर सेवा की शुरुआत हुई, और एयर सेवा की 3 वर्जन्स भी हो चुके हैं। जैसे जैसे हमें पैसेंजर से फीडबैक मिलता गया तो इसको और बेहतर कैसे करें, इसके अलग अलग वर्जन्स, तो एयर सेवा 1.0, 2.0 और अभी 3.0 का मैकेनिज्म चल रहा है। और इसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हमारे इन्वॉल्व हैं, जैसे एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स तो होंगे ही, उसके बावजूद भी DGCA जो हमारा सेफ्टी रेगुलेटर है, BCAS जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है, इमिग्रेशन और अदर स्टेक होल्डर्स, हेलीकॉप्टर डिवीज़न भी है, जिनके साथ भी इनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसके संबंध में ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं
उनके साथ, मंत्रालय के साथ, ये एयर सेवा के साथ एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट इसी के लिए बनाया गया, जो प्रश्न भी उन्होंने आदरणीय सांसद जी ने पूछा कि क्या कितने समय में होता है या फिर उसमें क्या कार्रवाई होती है। तो ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक बनता है ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, और जो भी विषय एयरलाइंस के संबंध में हो या एयरपोर्ट के संबंध में हो या इमिग्रेशन के संबंध में हो, जो भी विषय उठाया जाता है उस सब का हमने डिफाइन कर दिया है कि कितना समय में उन सबको हमें एड्रेस करना चाहिए। एक दो का अगर उदाहरण मैं दूं तो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमारा DGCA के साथ अगर एयर वर्दीनेस के संबंध में है तो उसमें जाहिर किया हुआ है कि 15 डेज़ के अंदर इसको सुलझाना चाहिए। अगर पैसेंजर राइट्स की बात आती है और एयरलाइंस में डिलेस हो तो 1 दिन के अंदर, या फिर टिकटिंग या फेयर या रिफंड की है तो 15 डेज़ के अंदर। सो ग्रीवेंसेस जो भी एयर सेवा के तहत हमें आते हैं सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है सर्विस लेवल एग्रीमेंट के हिसाब से, कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से आपके जो इस तरीके के ग्रीवेंस आएंगे तो इतने दिन में वो कर देना चाहिए। अगर वो कंप्लाई नहीं करते या वो टाइम लिमिट वो मेंटेन नहीं करते या वो ग्रीवेंस को उस दिन के अंदर वो एड्रेस नहीं करते तो मिनिस्ट्री उसके ऊपर इंक्वायरी करती है और तुरंत एक्शन भी लेती है कि क्यों नहीं किया, और उसके ऊपर वो स्टेक होल्डर्स को उनके साथ वो कंसल्टेशन में वो प्रोसेस होता है सर। लोकसभा मेंबर्स Raja Ram Singh, Dr. Shivaji Bandappa Kalge, Gyaneshwar Patil and Nilesh Gyandev Lanke, among others, asked the Minister of Labour and Employment the salient features of the recently approved employment-linked incentive scheme to boost employment generation in various parts of the country and the eligible sectors under the said scheme, and the details of the number of formal jobs created so far under the recently launched Employment-Linked Incentive Scheme, which was approved on 1st July 2025. The ministry, in its reply, informed the House that the Union Cabinet on 1st July 2025 approved the Employment-Linked Incentive Scheme titled the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana to promote employment generation, enhance employability and strengthen social security across all sectors, with a particular focus on the manufacturing sector. The scheme was launched on 15th August 2025. The scheme has a registration period of 2 years from 1st August 2025 to 31st July 2027 and a budgetary outlay of over 99,000 crore rupees. The estimated budget under the scheme for the financial year 2026-27 is over 20,000 crore rupees. The Employees Provident Fund Organization is the implementing agency for the scheme. A dedicated portal has been developed to facilitate all scheme-related processes. The scheme aims to incentivize creation of more than 3.5 crore jobs all across the country over a period of 2 years, including the state of Maharashtra, Madhya Pradesh and Dadar and Nagar Haveli. The scheme comprises of 2 parts, Part A and Part B, and focuses on providing support to both employees and employers by way of incentives. The scheme provides for incentives for 1.92 crore new eligible employees under Part A. Incentive for creation of approximately 2.59 crore additional jobs to employers is provided for under Part B of the scheme. As on 31st November 2025, a total of 1.14 lakh establishments have registered under the scheme. These establishments have enrolled 16.17 lakh new joinees and rejoinees, 40.14 lakh employees under the scheme. The scheme has been formulated after extensive consultations with all stakeholders, including labor-intensive ministries, trade unions, industry associations, and experts. Rajya Sabha MP Samik Bhattacharya asked the Minister of Petroleum and Natural Gas whether all land acquisition for Ashoknagar oil field project has been completed and the latest progress made since the grant of PML on 24th February 2025, and whether ONGC has commenced activities under the approved Integrated Field Development Plan and the specific milestones achieved so far. As the Honourable Member has said, sir, it is true that ONGC has spent 1,000 crores already on it. It is our estimate, sir, that the Bengal Basin
contains a total of 240 million barrels of oil equivalent in place, proven reserves. If you go by this figure, at 30% recovery, the cumulative production value can be around 45,000 crores, out of which the state of Bengal would get 4,500 crores. So the limited point I'm seeking to make here is that initially a lot of time is taken, long gestation, heavy capital expenditure, but once you begin to see the oil and gas being extracted, it's pure joy after that, because that expenditure is recovered. Now, the operator applied for a petroleum mining lease to the government of West Bengal in 2020. The provisional PML, petroleum mining lease, was received from the West Bengal government in February this year, February 2025. Sir, I've had the opportunity in June this year of convening an Urja Mantra, a meeting of all the states along with all the other stakeholders. And I'm very happy to say that there is a new enthusiasm, new spirit of cooperation, and everything is moving per head. I can understand the honorable member's anxiety. Are we going to get delayed further? Sir, the exchange of letters between ONGC and the West Bengal government has only taken place on December 10 and 12. I have copies of the letter with me. My reading, based on where we've reached so far, that in the light of the latest legislation which we have, the oil field development thing, which has come out after that date, I think it was notified only about 5-6 days ago, I don't see any problem. The situation is quite clear that stamp duty has to be paid on the duration of the entire lease. So if the lease in this case is 30 years, the stamp duty will be paid on the entire lease period. The issue is on royalty. Stamp duty will be paid on royalty as and when the royalty is received. I mean, the whole idea is to facilitate this both for the concerned state government and the operator. And I think the honorable member who's been pursuing this will also realize that there has been all-round movement on this. Personally, I'm not a soothsayer and I don't like to anticipate, but I think considering when we started, 50 years it's been going on. 2008, we had the production sharing agreement. 2018, we moved forward on the PML. Now we have everything in place, maybe another few weeks, and hopefully we can say that this is something that we have achieved and that production will go on. Sir, I'm very happy to tell you that states, when they cooperate with the exploration and production activity, they get revenue, sir. Rajya Sabha MP Kapil Sibal asked the Minister of Jal Shakti the current storage levels in the 150 major reservoirs of the country as on 15th November 2025 compared to the levels on the corresponding date in 2024, and if so, the details thereof and the central assistance provided under the Jal Jeevan Mission and Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana to the affected states. माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने प्रश्न उठाया गाद के बारे में, वो बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। करीब 15 से 20% गाद की वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है और ये गाद निकालना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए मंत्रालय की ओर से 2022 में एक नीति बनी है और नीति के जरिए वो गाद निकालना और राज्य सरकार के उसको सपोर्ट करते हुए, उनको टेक्निकल सहाय करते हुए ये योजना को अमल किया जा रहा है। और बहुत से जगह पर राज्य सरकार उसको टेंडरिंग कर भी अपनी गाद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गाद निकालने के समय गाद निकालने के बजाय गाद कम हो, उसके लिए भी जो साइंटिफिक सिस्टम के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। और ये दोनों को साथ में मिलाकर गाद की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिक कर्नाटक में जो उन्होंने मांगा है डिटेल, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। CWC की मंजूरी बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बिना कोई भी स्टेट अपना काम नहीं कर सकता। वो अपने पैसे से काम कर सकता है, फिर भी वो DPR बनाकर CWC से सैंक्शन करवाने के बाद ही वो काम कर सकता है। तो ये जो अगर ऐसे कोई किस्से उनके ध्यान में होंगे, हमें बताए जाएंगे तो हम ज़रूर उसके ऊपर ध्यान देंगे। Well, that is all I have for you in this edition of Question Hour. Stay tuned and thank you for watching Sansad TV. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।